वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम लेटर्स पढ़ रहे हैं और आज का लेटर नंबर 26 है हमारा। लेटर फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स और लेटर फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मेरी एक वीडियो में दो लेटर्स होते हैं, लेटर फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स और लेटर फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। पहला है हमारा लेटर फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग हिम एन आइडिया ऑफ लाइफ इन योर टाउन। दोस्त को अपने कस्बे के बारे में जो है कस्बे की जिंदगी के बारे में बताना है। याद रखे बेटे, इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें। एग्जामिनेशन हॉल A.B.C इन ब्रैकेट May 26, 2023 डियर फ्रेंड अस्सलाम-ओ-अलैकुम, डियर फ्रेंड अस्सलाम-ओ-अलैकुम exclamation mark. With great blessings of Allah Almighty, I'm enjoying sound health and hope that the same case will be with you, because health and good state of body are above all goods. अल्लाह ताला की रहमत से मैं अच्छी सेहत के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, चूँकि सेहत सब चीज़ों से बढ़कर है। Thank you for giving a detailed description of your countryside in your recent letter. अपने हालिया खत में आपने अपने गांव के बारे में जो तफसील लिखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ इन माई टाउन इज बिजी, दो नॉट एज बिजी एज द लाइफ ऑफ अ बिग सिटी। मेरे कस्बे में ज़िंदगी मसरूफ़ है, लेकिन इतनी मसरूफ़ नहीं जितनी बड़े शहर में होती है। देर आर पीक रश आवर्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड मिड डे बिकॉज ऑफ स्कूल्स एंड colleges school and colleges going students school and college going students। रश के बहुत से वक्त औकात होते हैं, सुबह के और दोपहर के, चूँकि स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा की वजह से। As it is rightly said, hold a book in your hand and you are a pilgrim at the gates of a new town or city। आप कोटेशन में जो टॉपिक होगा उसके मुताबिक लिखेंगे। सिटी का टॉपिक है तो सिटी लिखेंगे और टाउन का टॉपिक है तो कोटेशन में टाउन लिखेंगे। यहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं टाउन और सिटी दोनों का। फिर इसके बाद है हमारा इसके बाद है vegetables and fruit markets are also crowded early in the morning। सुबह सवेरे सब्जी और फलों की मार्केट भी जो है वो पुरहजूम होती है। हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स बाय vegetables and fruits from wholesalers to sell in different areas of the town। कस्बे के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचने के लिए हॉकर और फेरी वाले और शॉपकीपर जो है सब्जियां और फ्रूट खरीदते हैं। As someone has rightly said, a great town is a great town लिखेंगे या सिटी is not to be confounded with a populous one। populous होता है गुंजानबाद। There are 12 branches of banks where people deposit utility bills beside usually money transactions। 12 बैंक की ब्रांचें हैं जहां पर रोजमर्रा के पैसों के अलावा वो अपने रोजमर्रा डेली के जो है बिल भी पे करते हैं। देयर इज अ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन भी है। मैनी पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन्स डेली टू एक्सेस देयर वर्क प्लेसेस। बहुत से लोग अपनी जगहों पर जाने के लिए, काम की जगहों पर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज़ वाइजली सेड, आवर टाउन इज अ large community where people are lonesome together। My town is surrounded by agricultural land, orchards and forests। मेरा कस्बा ज़राअत, बागों और फलों से और जंगलात से भरा हुआ है। Peasant cultivate different
Peasant cultivate different kinds of crops throughout the year. किसान पूरा साल मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाते हैं. They grow शुगर केन गन्ना जिसको कहते हैं, मेज मकई, वीट गंदम, राइस एंड कॉटन चावल और कपास. As someone has rightly said, success as result of industry is the peasant ideal. Many laborers of my town work in bicycle and motorcycle manufacturing factories, cement plants, textile mills, flour mills, and sugar mills. As someone has rightly said, no human masterpiece has been created without great labor. Many visitors come to visit my town for business purposes and enjoy its beautiful surroundings. As it is wisely said, बहुत से सैरो तफरी करने वाले भी और बहुत से दूसरे लोग भी अपने कारोबार के लिहाज से मकासद के लिहाज से आते हैं और मेरे इर्द गिर्द के खूबसूरती से, मेरे कस्बे के इर्द गिर्द की खूबसूरती से लुत्फ उठाते हैं. As it is wisely said, the city is not a concrete jungle, it is a human zoo. People go to bed early and after 10 p.m. no remarkable activity is seen in my town, with the exception of a few restaurants and marriage halls. लोग सुबह जल्दी जो है ना वो सो जाते हैं और 10 बजे के बाद जो है मेरे कस्बे में ज़्यादा सरगर्मियां नज़र नहीं आती. सिर्फ इसके के रेस्टोरेंट और मेरा शादी हाल जो है वगैरह खुले होते हैं. एज इट इज़ वाइजली सेड, वन टच ऑफ नेचर makes the whole world kins. Pay my compliments to uncle and aunt, your loving friend, X dot Y dot Z dot. इसके बाद है हमारा लेटर नंबर 26. लेटर नंबर 26 है लेटर फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. ये है हमारा लेटर. दोनों ही बेहतरीन लेटर हैं. आप नॉर्मल वाला भी याद कर सकते हैं अपने लिहाज से, आपकी मर्जी है जो आप याद करना चाहते हैं वो याद कर सकते हैं. Assalamu-Alaikum. With great blessings of Allah Almighty, I am enjoying sound health and hope that the same case will be with you, because health and good state of body are above all goods. Thank you for giving a detailed description of your countryside से मुराद है village in your recent letter. Life in my town is town की जगह पर आप अगर city लिख रहे हैं तो city भी आ सकता है. In my city is busy, not as busy as life in the life of a big city. There are peak rush hours in the early morning and midday because of the school and college going students. Many students from nearby village come to my town to take education from college. As it is rightly said, hold a book in your hand and you are pilgrimage at the gate of a new town. Town लिखेंगे या city लिखेंगे. They use bustle cars, rickshaws, motor cycles, bicycles, and buses. There is a fooders market. Fooder market है खाने की market. One side of the town. It is always crowded with donkey carts, bull carts, trucks, and tractors that are carrying fodder for cattle. Vegetables and fruit markets are also crowded early in the morning. Hawkers and shopkeepers buy vegetables and fruits from wholesalers to sell in different areas of the town. As someone has rightly said,
A great town is not to be confounded as a populous one. There are 12 branches of a banks where people deposit utility bills. Besides usually money transactions, there is always railway station. There is a railway station where 8 trains stop for picking and dropping passengers. Many dwellers of my town, many people भी लिख सकते हैं. Dweller होता है रिहाइश रखने वाले, इसको उन्नत करने वाले. My nearby cities, they travel by trains daily to access their workplace. As it is wisely said, a town is a large community where people are lonesome together. My town is surrounded by agricultural land, orchards, and forests. Nature is quite open, abundant, and generous. Peasants cultivate different kinds of crops throughout the year. They grow sugarcane, maize, wheat, rice, and cotton. They use tractors, threshers, and other modern agricultural machinery. As someone has rightly said, success is a result of industry. As a result of industry is the peasant ideal. However, those who lack funds are use traditional methods of growing crops. Two canals pass through my town, which irrigate the soil of a lot of villages. My town has many shopping centers, malls, schools, colleges, factories, mills, and parks. Many laborers of my town work in bicycle and motor bicycle manufacturing factories, cement plants, textile mills, flour mills, and sugar mills. As someone has rightly said, no human masterpiece has been created without great labor. Usually they ride their bicycles to go to their workplace. There are parks on both sides of the canals where people gather in the evening to relax. Children play different games in excitement in this pleasant atmosphere. Many visitors visit my town for business purposes and enjoy its beautiful surroundings. As it is wisely said, the city is not a concrete jungle, it is a human zoo. People go to bed early, and after 10 p.m., no remarkable activity is seen in my town, with the exception of a few restaurants and marriage halls. As it is wisely said, our town, one touch of nature makes the whole world kin. My Pay my compliments to aunt and uncle, your loving friend, X dot Y dot Z dot. Have a nice day. Allah Hafiz.